ये वॉशिंग मशीन है, इसका टब टूट गया था। पहले हम ये शोकर फंसाएंगे, ये बैलेंसिंग शोकर। इसके बाद में ये यहाँ शोकर फंसा दिया, या मैं स्क्रू कसूँगा। इसके बाद में ये शोकर इसके अंदर जाएगा इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से यहाँ शोकर के नट लगाएंगे, फिर ऊपर तरीके से कसने के बाद में ये ड्रेन होज है, इस ड्रेन होज को यहाँ पर कनेक्शन करेंगे इसका। ये लग गया इस तरह से। इस तरह से बैठा देंगे। फिर ये है ये बैलेंसिंग पत्थर है। यहाँ ये गैसकट लगेगी इस तरह से। इसके अंदर कील है, ये कील निकली है इसके अंदर। स्टार्ट करेंगे अब।
वॉशिंग मशीन रिपेयर हो गई है अब। एक बस स्टैंड। पर आप आज लिंक में रहना, अगर कुछ नहीं दिक्कत नहीं, करते हो तो, हाँ? बिल्कुल। वॉशिंग मशीन है, इसका टब खराब है।